There is a very famous saying, no one can stop an idea whose time has come. So, for almost 2 years, God knows why, the government was sitting pretty happily on this book written by General Narwani, The Four Stars of Destiny, and was not approving it. But now the timing has come. So, yesterday, the timing came in the Lok Sabha after the president's address, when BJP ministers were praising themselves how the national security has been strengthened. That's when Mr. Rahul Gandhi touched a raw nerve by referring to General Narwane's book. Now, what followed thereafter was the Home Minister, the Defense Minister, and other ministers were on their feet. Now, General Narwane wisely is in no hurry. He knows the courts would not be able to answer these questions that he has raised. But we as citizens must ask, why is this book so unsettling that it is not being approved even after 2 years? What does it expose or does not expose anything? And why does it matter to a nation currently which is living in a state of a strategic frenzy? Now, the excerpts जो हैं इस book के, they highlight two critical issues. Both strike at the heart of कि इंडिया कैसे अपनी क्राइसिस सिचुएशंस को, वॉर को, पीस को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज कर रहा है. जनरल नरवाने की किताब में उन्होंने ये मेंशन किया कि ड्यूरिंग द क्राइसिस जब चाइनीज टैंक्स वर एडवांसिंग टुवर्ड्स इंडियन पोजीशन एट रेचनला, तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर सॉट फॉर इंस्ट्रक्शंस. उन्होंने फोन किया नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने. अब लेट अस बी क्लियर अबाउट वन बेसिक ट्रुथ कि वॉर जो है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होती है, नॉट अ मिलिट्री वन. द मिलिट्री ओनली एग्जीक्यूट्स द पॉलिटिकल लीडरशिप decision or political leadership owns the decision. अब army chief therefore frantically contacted the defense minister, national security advisor. Eventually रक्षा मंत्री ने respond किया और वो बोले कि I'll come back after speaking to prime minister. And after 5-10 minutes he called back with a single sentence कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो उचित समझें वो करें. Do whatever you deem appropriate. This was night 31st August 2020. अब यह एक लाइन जो है is the pivot of entire debate. ये कोई delegation नहीं है, ये है abdication. At the most critical moment, the political leadership जो थी stepped away from accountability, leaving the army chief to carry both operational and strategic liability alone. Now, when this crisis was unfolding in Ladakh, तो India lost one commanding officer, Colonel Santosh Babu, एक infantry unit के CO थे, along with 20 soldiers at Galwan. उस पेट्रोल पॉइंट पे जो कि हमारा था, वो वहां पे गए थे to verify whether Chinese troops जो थे जिन्होंने वो जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी वो वहां से विड्रॉ हुए या नहीं हुए. Now, this immediately raises uncomfortable question. पहला, why was a commanding officer, a battalion commander, who is responsible for almost 1,000 men, that includes officers, junior commissioned officers, non-commissioned officers and men, and was leading a patrol of just 20 men? Now, second is that ऐसे tasks are normally carried out by a या कोई young captain or major और a company commander. कोई भी infantry officer उससे अगर पूछो will tell you कि CO does not lead such routine patrols. अब question refuses to go away is किसने ऑर्डर किया कि CO साहब जो है 20 आदमियों को लेके पेट्रोल पे जाएं? What were the constraints? ये क्वेश्चंस हैं सिस्टम के, कमांड के, कि ऐसा क्या हुआ था कि CO साहब को जाना पड़ा. जो दूसरा मेजर रेवलेशन है जनरल नरवाने इसके बुक में, वो कंसर्न करता है दी अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम.
और वो ब्लंटली डिस्क्राइब करते हैं उसको, अग्निवीर स्कीम को, दैट इट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, they were caught off guard. What they had discussed earlier was a limited tour of duty concept and not a sweeping transformation of recruitment and force structure, जिसमें पूरा रिक्रूटमेंट पैटर्न ही आर्म फोर्सेस का चेंज कर दिया जाए. अब एक पैटर्न इसमें इमर्ज होता हुआ दिख रहा है दोनों चीजों से, कि जब कन्वीनियंट होता है तो गवर्नमेंट जो है आर्म फोर्सेस को इट डज नॉट टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, और जब इनकन्वीनियंट हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास डाउनवर्ड्स क्वाइटली. अब ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है. दीज इंसिडेंट्स पॉइंट टू अ डीपर शिफ्ट कि हाउ पॉलिटिकल अथॉरिटी और मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म इंटरैक्ट कर रहा है. अब इसको समझने के लिए कि क्या चेंज हुआ है, हमें वापस पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि कोई ऐसे उदाहरण हैं कि 1967 में नथुला और चोला जो सिक्किम में है, इंडियन आर्मी ने डिसाइसिवली चाइनीज एग्रेशन को काउंटर किया था और इंडियन ट्रूप्स इन्फ्लिक्टेड ऑलमोस्ट 300 to 400 कैजुअलिटीज ऑन चाइनीज आर्मी. आफ्टर लूजिंग 80 men, Indian army responded with overwhelming artillery fire, destroying Chinese bunkers and thereby killing 300 to 400 Chinese soldiers. China withdraw हो गया. यह डिटरेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड जो कि 2020 तक कायम रहा. और उसमें लीडर्स कौन इन्वॉल्व थे? मेजर जनरल सगत सिंह जो जीओसी थे, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा कोर कमांडर थे, और लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ जो कि ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे. ये वही ऑफिसर्स थे जिन्होंने लेटर ऑन दे डिलीवर्ड द 1971 विक्ट्री, और जनरल सगत सिंह हु कैप्चर्ड ढाका. अब अपने आप से आस्क ऑनेस्टली कि डिड सगत सिंह दैट टाइम इन 1967 वेट फॉर पॉलिटिकल क्लियरेंस आफ्टर लूजिंग 80 men? क्या उन्होंने पूछ के काम किया था? क्या उन्होंने पहले ही अपनी मीडियम गन्स को डिप्लॉय नहीं कर लिया था इन एंटिसिपेशन ऑफ एस्केलेशन? डिड सैम मानेकशॉ एज द ईस्टर्न आर्मी कमांडर seek permission for every operational move and took permission? Go into details. Answers are self-evident. अब हम आते हैं 1986-87. China moved its troops to Guangdong and began permanent construction, violating post-1962 arrangements. India ने respond किया. General Sundarji, then who was the army chief, launched Operation Falcon. Troops और vehicles airlift किए गए to Zamithang. Strategic heights like Hatungla Ridge were occupied. This was executed under a cabinet committee on security directive जो 1983 में इशू हुआ था, which said कि तवांग सिटी should be defended. अब जब Chinese threats escalated तो एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें civilian bureaucrats questioned whether the army chief had exceeded its brief. General Sundar ji का response was very sharp. He said defending Tawang required holding Hatungla और ये आर्मी का प्रोफेशनल जजमेंट है. Civilian interference, he reminded them, caused 1962 debacle. Objections वहीं रुक गए और political backing followed. Despite China deploying 20,000 troops और later on उसने reinforce भी किया उन्हें 8 डिवीजन से, India escalated the conflict confidently. It granted statehood to Arunachal Pradesh in February 1987. Despite Chinese threat, conducted Operation Checkerboard, which involved 50,000 troops का deployment, additional 10 divisions का deployment, और moving of Indian Air Force squadrons and Mi-26 helicopters. The Chinese and the Indian troops stood eyeball to eyeball for months, and war was predicted. And then China backed down. Why? क्योंकि government owned the political risk and the army was allowed to operate freely. अब अपने आप से पूछो कि क्या जनरल सुंदर जी he could have acted unilaterally? क्या आर्मी चीफ उस समय could he have granted statehood to Arunachal Pradesh? Of course not. ये सब political decisions थे taken consciously.
इवन एट द रिस्क ऑफ वॉर, जब चाइना थ्रेटन कर रहा था, परंतु किसी ने भी माइक्रो मैनेज करने की कोशिश नहीं करी मिलिट्री ऑपरेशंस को। और अब कॉन्ट्रास्ट देखिए 2020 का, कमांडर्स दे वर रिंगिंग अप दिल्ली एट क्रिटिकल मोमेंट्स, सो टैक्टिकल डिसीजंस बिकेम होस्टेज टू डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग। ताजुब नहीं है अगर मेजर बत्रा, कैप्टन पांडे जैसे यंग कैप्टन्स और मेजर्स कारगिल की ऊंची पहाड़ों पे एनिमी पोस्ट कैप्चर कर सकते हैं, तो ये जाके एग्जामिन नहीं कर सकते थे, कंफर्म कर सकते थे चाइनीज गए या नहीं गए। उसमें कमांडिंग ऑफिसर को जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। नाउ टुडे द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लीड्स द WMCC ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, और दिस मेक्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक नोडल अथॉरिटी ensuring military actions align with the diplomatic agreements on peace and tranquility. और ये उसी का नतीजा है। That's why SCO was sent. Excessive caution and operational ambiguity at the front line, because MEA, Ministry of External Affairs, is the nodal authority on this. And perhaps this is the reason that one colonel, a CO of a battalion, was sent on a patrol duty, because feeling कि एक young officer might escalate the situation while a senior officer is expected to be mature. The same pattern appears elsewhere also. पहला पूरा recruitment system ही overall कर दिया इंडियन आर्मी का without taking armed forces into confidence. Opening cantonment roads to public use, जिससे मिलिट्री की जो फैमिलीज हैं जो कैंटोनमेंट में रहती हैं, जिनके हस्बैंड्स वो बाहर हैं, फील्ड एरियाज में हैं, यू आर पुटिंग देम एट रिस्क. सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी while distancing from consequences. Civil control is essential, but civil overreach can be dangerous. अब हम पार्लियामेंट में या भाषणों में क्या कहते हैं, that does not define national security. जो हम करते हैं वो डिफाइन करता है, वो बताता है. And that's why it is said that the behavior never lies. 1967 और 1987 में it showed confidence, clarity और ownership दोनों का. 2020 shows hesitation, diffusion of responsibility and fear of accountability. And that perhaps explains when the enemy tanks were moving towards Rechenla, the clarity was missing. And so why India, despite its power, appeared uncertain. There is a larger warning. National security cannot run on slogans and chest thumping. Now there is a hidden lesson also. Why could Sam Manekshaw, General Sundarji, General Sagat Singh stand up to political leaders? Suddenly तो नहीं किया होगा उन्होंने. It was because the system allowed such officers to rise in the career. Field Marshal Sam had faced an inquiry on the grounds which are unthinkable today. And अगर ऐसे grounds पे तो आज Sam would have been sent home. Nehruji waived those charges and sent him to NEFA, and subsequently Sam Manekshaw became the chief and an asset. If this ecosystem does not change, we may see similar things happening. Commanders waiting for instructions. So hats off to General Narwane. He acted alone with courage, but sadly the government quietly ate all the laddus and the pudding. That is also a lesson that the Indian army would have learned, and the top leadership, political leadership, has taught this. History tells us how dangerous that lesson can be. Thank you. Jai Hind.